तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा दे, मुझको फिर वो प्यार दे। जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू दिल जान माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाता, जन
फलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय प्रिय देशाचा फडकतवरी महान झेंडा आमचा प्रिय देशाचा फडकतवरी महान करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम लढले गांधी याच्या करिता टिळक नेहरू लढली जनता समर धुरंधर वीर खरोखर अर्पून गेले प्राण करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम भारत माता आमची माता भारत माता आमची माता आम्ही गातो या जय गीता हिमालयाच्या उंच शिरावर फडकत राही निशाण करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम या देशाची पवित्र माती जुळती आमच्या मधली नाती एकनाद गरजतो भारत तुझा आम्हा अभिमान करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम गगनावरी आणि सागर तीरी सळसळ करती लाटा लहरी जय जय भारत जय जय भारत गाताती जय गान करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम झेंडा आमचा प्रिय देशाचा फडकतवरी महान झेंडा आमचा प्रिय देशाचा फडकतवरी महान करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम करीतो आम्ही प्रणाम याला करीतो आम्ही प्रणाम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो कासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिनके दम से गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा जय हिंद। आज इस शुभ अवसर पर 15 अगस्त 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे गांव को
अवार्ड मिल रहा है डॉक्टर शंकर की तरफ से, और हम उनको और उनके स्टाफ को बहुत शुक्रगुजार है कि हमें आप सबको यहाँ मुंबई में बुला के हम सबको ऑनर किया है। थैंक यू। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
Good morning, Namaskar, Sat Shri Akal. On behalf of our President, members of the Managing Committee and the Board of Trustees of the Sri Shanmukhananda Fine Arts and Sangeeta Sabha, I take immense pride and joy in extending a very warm welcome to Lieutenant General H.S. Kalonji, GOC General Officer Commanding Maharashtra, Gujarat and Goa, his lovely wife, Mrs. Harkiran Kalon, and our principal guest of honor, Shri Umesh Revankar, Vice Chairman and MD, Shri Ram Transport Finance Company Limited. It is our honor and privilege to welcome Mrs. Andrea Kuhn, Consul General of the Republic of South Africa, and Mr. Patrick. South Africa, where the seeds of our freedom struggle were sown, and the country we share close strategic, cultural, and economic ties with. Also honoring us today with her presence is Mrs. Maria Virginia Yapur, Deputy Consul General of Argentina, yet another beautiful country. और स्वागत है हमारे फौजी भाइयों का और यहाँ उपस्थित आप सभी का। और आप सबको हमारे तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। Today also marks 100 years of the Chauri Chaura incident, when a large crowd of peasants clashed with the police and set fire to the police station, killing 22 policemen. This resulted in Mahatma Gandhi calling off the non-cooperation movement, which he saw as having been tainted by unforgivable violence. A follower today gives you a photo glimpse of this incident, and we also take you down memory lane with lamps adorned with the photos of freedom fighters, with pictures depicting the journey of the Indian flag, and also the lesser known facts about our national anthem. If you have not seen it already, I insist that you please take a look at this lovely exhibit that our President Dr. V. Shankar has so beautifully compiled and put together, and I'm sure your heart will swell in pride as you read the details. India also shares her Independence Day with the Kingdom of Bahrain, South Korea, Liechtenstein and the Republic of Congo. This year is also a major milestone in the history of the Sabha, as we have commenced our Platinum Jubilee celebrations of 70 years, and on August 22nd will commence the Diamond Jubilee of this magnificent auditorium. Before we begin with the program, an earnest request to please keep your mobile phones on silent mode, and we also request you to leave the flags behind in the seats once the program ends. कृपया कार्यक्रम संपल्यानंतर झेंडा ऑडिटोरियमच्या बाहेर किंवा घरी नेऊ नका. तिरंगे को सीट पर ही रहने दें और अपने साथ प्लीज नहीं ले जाइएगा. Vedic chants generate positive vibrations and place the mind in a state of heightened aspiration, inspiration and devotion. Let us begin with this invocation by the Vidyarthis of the SIS Nerul Veda Pathshala and pray that it brings one closer to the gods in heaven and the gods within. Yeah.
हरि ओम। Sarva Dharma Samabhava is a concept embodying the equality of the destination of the paths followed by all religions, although the paths themselves may be different. हमारे पथ भिन्न भिन्न हैं, पर अंत में हम सब उसी परमात्मा या परम शक्ति की तरफ चल पड़ते हैं। आप चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या मत के हो, आप चाहे ईश्वर के किसी भी रूप में आस्था रखते हो, आइए जुड़ते हैं SIS के छात्रों के साथ इस सर्वधर्म प्रार्थना में।
Jana Gana Mana is a 5-stanza Brahmo hymn composed and scored in a highly Sanskritized Bengali by Nobel laureate Rabindranath Tagore. It was written in 1911 and later on
Its first stanza was adopted as the national anthem of India on 24th January 1950. The students of the Sangeeta Vidyalaya will sing all 5 stanzas, but we expect you to only stand for the first stanza and you can sit through the rest. आप सिर्फ पहले स्टांजा के लिए खड़े रहेंगे, बाकी के लिए कृपया बैठ जाइए.
और आइए अब अभिलाषा की मधुर आवाज में सुनते हैं काबुली वाला फिल्म में मन्ना दी जी का गाया हुआ वो गाना जो हमारे रूह को छू कर निकलती है। हृदय में गूंजने वाला वो गीत है ऐ मेरे प्यारे वतन। What a soul-stirring edition that was. Thank you, Abhilasha. May I now invite our dignitaries on stage, please.
Lieutenant General H.S. Kalon, sir. His lovely wife, Mrs. Harkiran Kalon. Umesh Revankarji, the Vice Chairman and MD of Shriram Transport Finance Company Limited. Our President, Dr. V. Shankar. And our Honorary Secretary, Dr. V. Rangraj. I now request our President to felicitate Lieutenant General H.S. Kalon, sir. We really appreciate our association with the Indian Army and wish to strengthen our bond even further. We present Lieutenant General Kalonji with a shawl and commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we present him with an exquisitely crafted tricolor in khadi that comes in an attractive box and also some books. The Army now wishes to reciprocate our friendly gesture with one of their own. They are gifting us this beautiful gift. Thank you so much, sir. Srimati Lakshmi Ramaswamy, our Honorary Secretary, will now felicitate Mrs. Harkiran Kalonji with a shawl. And a hamper that has been sponsored by Society Team. Our President will now felicitate Shri Umesh Revankarji. Thank you, sir, for accepting our invitation and being present here today. He's presented with a lovely manga shawl. Also the magnificent tricolor and some books. We also now take this opportunity to felicitate our guests from the consulates of South Africa and Argentina. May I request Mrs. Andrea Kuhn, the Consul General of South Africa, to please come onto the stage. Ma'am, please accept this lovely shawl. And I tricolor. Some lovely coffee table books.
I now invite Mrs. Maria Virginia Yapur, Deputy Consul General of Argentina, to please come on stage. Can we keep the claps going, please? That's Lakshmi Ramaswamy, our Honorable Secretary, presenting her with a shawl. The Society tea hamper, the tricolor, and some books. Friends, without the support of the sponsors, many programs, events, and spaces would not be viable. Their generous contributions inspire and motivate us to keep going. We wish to take this opportunity to express our sincere thanks. Please, may I call upon Shri Manoj D. Kare, General Manager, Mumbai Bank of Maharashtra, please. Sir, please come on to the stage. That's Shri Manoj D. Kare. Mehul Shah, Shri Mehul Shah, MD and CEO of N-Cube Ethicals Limited. Shri Mehul Shah. Thank you, sir, for your support. Shri Srinivas Rangan, Executive Director, HDFC Limited. Okay, I'm sorry, he isn't here. Shri Ramesh Ji, MD HDB Financials Limited. Sorry. I stand corrected. Shri Ramesh Ji, HDB Financial Services Limited. Shri S. Venkatraman, Managing Partner, V. Shankar Iyer and Company. Shri S. Venkatraman. Shri Mahinder Punwani, Director, Nishchal Israni Foundation. That's Shri Mahinder Punwani.
Shri S. Balamurugan, Director Sales and Marketing, Shriram Transport. Shri S. Balamurugan. Shri Nishit Chaturvedi, Chief HR and Administration, National Payments Corporation, India. Nishit Chaturvedi, sir. Shri Prajyot Vijay Gandhi, Government and Institutional Business, HDFC Bank Limited. Shri Prajyot Vijay Gandhi. Sir. Okay. We have Shri Sameer Jadhav representing Government and Institutional Business, HDFC Bank Limited. We wish to thank Society Tea for the lovely gift hamper that they have sponsored, and Shri Sanjay Shah is here, but he's requested that we not call him on stage. So thank you so much, sir, for your support. Okay. समधी जी ने बुलाया तो आना ही पड़ेगा, है ना? अच्छा नहीं, अभी आप से ओके. We move on to Guru Kalyana Sundaram Pillai ji, Director of Rajarajeshwari Bharatanatyam Kala Mandir. Please, Guruji. Please give a big hand for Guru Kalyana Sundaram Pillai Master.
We would also like to felicitate Srimati Meera Jagan, a leading voiceover artist and a theatre personality. You will be witnessing her performance in the second half. Srimati Meera Jagannath. Please give her a big round of applause. Lakshmi Ramaswamy doing the honors. She received the wonderful society hamper, a book, the lovely shawl and the tricolor. We are extremely grateful to all our sponsors who have made this event possible. May I now call upon our President, Dr. V. Shankar, to please address the gathering. मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथिगण, इस भव्य सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और अन्य देशवासियों, आज़ादी की अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर षण्मुखानंद ललित कला और संगीत सभा की ओर से आप सभी को हमारे शुभकामनाएं, सप्रेम नमस्कार और सदैव आपके लंबे आयु और आरोग्य के लिए प्रार्थना करते हुए आज का इस वक्तव्य को आरंभ करता हूँ। It gives me great pleasure to welcome you all to this pleasant and solemn function organized this morning to commemorate the 70th year of Indian independence. Time has indeed flown. It was as if a decade or two before, the first Prime Minister of the country, Pandit Jawaharlal Nehru, hoisting the tricolor from Rampart Row, addressing the nation, said, long time ago, we had addressed with destiny. Now the time has come to redeem that pledge, though not in full measure, but substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world is asleep, India shall awake to life and freedom. 75 years in the history of an institution or that of a nation may not be a long period. Nations are structured for perpetuity. But formal markers like the Amrit Mahotsav do provide an occasion for reflection of going down the memory lane to assess the contribution of the country to its growth and development over this period, and more importantly to reflect on those laggards and those limitations that had kept the nation behind, and to redesign the democratic framework to meet the aspiration of 1.35 billion strong people of this country. There is no denying that India has made substantial progress in various fields of human endeavor over the last 75 years. But equally so, when the first alphabets were etched in tablets of clay in Indus Valley more than 4,000 years ago, we still have several Indians who cannot read and write. More than 1/4 of the population goes to bed every day without a morsel of food and clean drinking water. That is why these celebrations assume great significance. The Shanmukhananda Sabha is not merely a cultural institution. Over the last 70 years, it has redefined culture in its widest import to cover all aspects of human endeavor, community healthcare, and social initiatives. 5 years ago, it entered into a meaningful understanding with the General Officer commanding Maharashtra, Gujarat and Goa to celebrate the national days
for the welfare of the men in uniform. While the 15th of August is devoted to the memory, the remembrance and the glory of all those people who had sacrificed their lives to the cause of the nation, the 26th of January is for the wounded warrior. This journey of celebrating the life and times of men in uniform continues. Over these years, India's need for arousing public concern and consciousness to the men in uniform has intensely increased in later years now than the field that was there during the freedom struggle. Today, we are remembering and paying encomiums and tributes to all those men who gave the supreme sacrifice of their life in the last year from this command area, and also a few others from Gujarat who could not be honored on earlier occasion because this year is indeed a special occasion. It is our way of sending the message far and wide that these people are not alone in their hour of distress and despair, and that the civil society shall do everything that is possible to go out of its way to bring harmony and balance in their life, equilibrium into their thinking, and quickly bring them to mainstream life. It is also our way of ensuring that we do not erase from memory the supreme sacrifice of these soldiers and also that of their families from the national collective conscience. These fallen men are the real heroes of the nation. They may bear their name in their jersey, but not their heroics. They fear no death or even life. Death to them is like a feather, whereas the duty is as heavy as a mountain. They fight the enemy ferociously, not because they hate him, but because they love the nation and the people who are behind him. They miss their homes so that we are safe and secure in our homes. They fight to finish because there are no runners-up in war. Today the families of these men have come all the way from different parts of Maharashtra and Gujarat to participate in today's function. We are indeed grateful to these families for having come all the way to experience what a civil society will do to remember them in their hour of grief. We have, in our own way, been offering a small solatium to them and articles of common utility value on each of the Independence Day when the martyrs' families are being felicitated. But it is too symbolic. But it certainly reflects the true love and affection that this institution and the society in general has for all the men in uniform. It is not one of a sort that we can bring smile onto their faces one day by bringing them onto the platform. This institution pledges itself to be of continually associated with these families so that it shall bring sunshine in their lives. जल रहे दिए घरों पे चमकती हुई शाम, उदास है उस घर का दिया सरहद पे जिसका जवान शहीद हुआ. कवि की कल्पना दिवाली की शाम की है, दिवाली की रात की है. घर वाले तो उदास है पर घर की दिया भी तो उदास है. इस उदासीनता को मिटाने के लिए ही ये हमारा प्रथम कर्तव्य है. हम सदैव निर्भर रहेंगे. कलकेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा. भूलेंगे वो भूलेंगे तुम, पर हम रहेंगे तुम्हारे सदा. These men in uniform live and die in honor of the national flag. They coexist and cohabit with the tricolor.
झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. This flag flies high, not because of the wind that bristles it upwards, but because of the sweat, the sacrifice and the labor of countless number of men in uniform who have protected the flag and given the dignity that it deserves at all times. Be it when he is alive or when he is dead, the flag remains with him. When he comes back from the battlefield, victorious as he were, he carries the flag atop to the joy and merriment of the citizens who witness his comeback, their Vapsi. But God forbid, if he were to terminate his life journey to action in the battlefield, he is draped in the tricolor, placed in the coffin, and then brought to 21 gun salute, lowered in his hometown for the final resting place. Dead or alive, this flag is all that he lives, breathes for. Har Ghar Tiranga is not a marketing gimmick. It is certainly not an extra bout of patriotism to be given on a milestone occasion like Azadi Ka Amrit Mahotsav. The orange band, the Bhagwa in the flag, not only reminds us of the sacrifice of the founders of this nation or that of the freedom fighters, it also reminds us of the supreme sacrifice of men in uniform, be it in the land, the terrains of the plains, or in the waters, or in the sky. So when we flutter the flag high from our houses, be it our house, the huts, be it the chawls, the house, the mansions, the palaces, the fields, the ships anchored or in the waters or up in the sky where we fly high. When this flag flutters high, it will constantly remind us of our duty, of what we owe to these men, because of whom we are what we are. As I said at the beginning, this nation has made substantial progress in various fields of human endeavor. It had witnessed 4 major revolutions since independence. The Industrial Revolution of 1956, the Operation Flood, which is the Operation Milk, the abundance of milk in the early 60s, the Agricultural Revolution in the later 60s, both under Lal Bahadur Shastri ji, the IT revolution of the early 90s, and today we are in the cusp of yet another revolution, the digital revolution, which will redefine the way we think, we live and coexist and cohabit with others. All these revolutions have taken this country to grateful heights, to a power of dominance in the respective fields. And yet, it is a sad commentary that the growth story of India is lopsided. It is urban-centric. Vast tracts of land habited by the majority of Indians, deep hinterlands of this country, which have not been connected to the mainstream, have not experienced what freedom is all about. They live each day only to survive. Independence makes no meaning to them. The gains of democracy have not reached them. On this Amrit Mahotsav, let us dedicate ourselves and pledge not only to take the gains of democracy and freedom, but also equitably distribute the gross domestic product of this nation, which is surging day after day, for the rest of the countrymen too, so that they also will experience what it is to be part of a developing country which is fast moving towards a developed country. It is easy for us to dismiss the limitations of our democracy on the political system and of the successive governments in power. Yes, they have had a great share to the failure of this nation in these fields. But as John F. Kennedy said once, ask not what the nation has done to you, ask what have you done to the nation.
It is futile to cry over spilt milk, and more so on a dismal past. We have to keep the past behind and surge ahead with confidence and determination. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिख देंगे मिलकर नई कहानी. हम हिंदुस्तानी मिलकर एक नए भारत की निर्माण हम जरूर करेंगे. At the dawn of independence, there was a clarion call to hand over this nation to the younger generation at that point of time. But the freedom fighters of that time converted themselves into political masters and never yielded it to the younger generation. 75 years later, even today, we are experiencing the same call. 41% of this country's population is below the age of 30. 53 crores, more than that, is the age segment up to this age. We have great confidence in this young generation of ours. They are more than equal to the task that can come onto them. They are the architects of our destiny. They are the shapers of our future. They are the engines of our growth. हमें नाज है, इन पर गर्व है कि इस युवा पीढ़ी हमें आगे ले जाएंगी. It's time that the lever of power and governance moves over to the younger generation, and maybe on this joyous occasion of Amrit Mahotsav, pledge ourselves to do that. अब समय आ गया है इस स्वागत भाषण का विराम देने के लिए. मन तो विचलित है, यादों की बरसात हो रही है. स्वर्गीय बड़े प्रधान भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है. वाजपेयी जी की इस कथन, इस काव्य देश के भविष्य का मार्गदर्शन है. जो पाए हो उसे कमाना है और जो पाया है उसे न खोना है. आज़ादी अब तो अधूरी है. आगे सुनिए. आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों से घेरा, अंतिम जय की व्रज बनाए, नए ददीची अड्डिया दिलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए. On this auspicious occasion of the 70th year of our independence, may we all pledge, हम मिलकर एकजुट होकर कंधे से कंधे लगाकर संकल्प ले कि एक नए भारत के निर्माण करेंगे. इस उज्जवल भविष्य के लिए सततम प्रयास करेंगे और हम पे कुछ कमियां नहीं रहेगी जिससे ये देश पीछे रहेगी. जय हिंद, जय जवान, जय किसान. What an inspiring speech that was, sir. Thank you so much. Despite being at peace, India has the largest number of war widows in the world. Every year we have fresh battle casualties, and every year we have more women faced with this colossal tragedy. According to data, at least 90% of army widows live in rural areas and have minimal education. Many of these women are widowed before they are 30, and for the next 4 to 5 decades of their lives, they are left with an unending struggle to survive their laws, raise their children, and take care of their families. We salute these Veer Naris who have made this great sacrifice. They are as much worthy of our respect and admiration as their husbands are, our fallen heroes are. I request Srimati Harkiran Kanun to felicitate these Veer Naris. Geeta Ningure, wife of Havaldar Rakesh Krishna Ningure.
Havaldar Rakesh Krishna Ningure, resident of Kolhapur, was enrolled in the Indian Army on 18th December 2007 as part of 105 Engineer Regiment. During service, he was deployed in various field locations along with the eastern borders in Assam in an insurgency-affected location. For his good work, the NCO was nominated for the United Nations missions in South Sudan on 21st January 2022. While on duty, the NCO made the supreme sacrifice in the service of the nation. Each Veer Nari receives a check of rupees 2 lakh, a trolley bag with gifts worth 50,000 and a gift hamper from society. Ujjwala, mother of Sapper Mane Pradeep Sanjay. Sapper Mane Pradeep Sanjay, resident of Thane, was enrolled in the Indian Army on 27th March 2019 as part of the Bengal Engineer Group, Kirki, Pune, and was posted to 269 Engineer Regiment. During service, he was deployed along the harsh environment and terrains along the northern borders in counter-insurgency environment at locations such as Jammu and Kashmir. He was active and quick in learning the basics of counter-insurgency operations and quickly grasped all procedures, drills and procedures being followed. While on active duty on 25th February 2022, the valiant soldier made the supreme sacrifice in the service of the nation. Geeta Ben, wife of Havaldar Bariya Tulsi Bai Raiji Bhai. Havaldar Bariya Tulsi Bai Raji Bhai, resident of Chota Raipur, was enrolled in the Indian Army on 2nd February 2002 in 21 Mahar Regiment. During his service career, he served in various inhospitable and difficult locations along the northern as well as eastern borders, to include the counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir and twice in Northeast. While deployed in hard field and high altitude area in Jammu and Kashmir during active duty, he made the supreme sacrifice in the service of the nation as per the highest values and traditions of the army. Suvarna, wife of Subedar Doifode Lakshman Santu. Subedar Doifode Lakshman Santu, resident of Pune, was enrolled in the Indian Army in 1995 in Corps of Signals. During his service, he served in various difficult and inhospitable terrain and weather along the northern, western as well as eastern borders in Jammu and Kashmir, Nagaland, Punjab and Rajasthan. He was deployed in an operational task in forward location of Siang Valley, Arunachal Pradesh, to stabilize communication link for the detachment and alignment operational preparedness under Operation Snow Leopard along the northern borders. During this operation, he passed away. Sangeeta, wife of Havaldar Badoria Kuldeep Suresh Singh. Havaldar Badoria Kuldeep Suresh Singh, resident of Ahmedabad, was enrolled in the Indian Army on 25th September 2000 in 12 Guards. During his service in the army, he served with distinction in various operational and difficult locations along the northern borders in Jammu and Kashmir, Leh and Srinagar. While he was posted with his unit, 12 Guards sacrificed his life defending the nation. Nanda, wife of Subedar Suryavanshi Pramod Narayan Rao. Nanda, wife of Subedar Suryavanshi Pramod Narayan Rao. Subedar Suryavanshi Pramod Narayan Rao, resident of Latur, was enrolled in the Indian Army in 1994 in 216 Medium Regiment. During his years in the army,
He served in various inhospitable locations and weather along the northern and eastern borders in Jammu and Kashmir and Arunachal Pradesh. In Operation Rakshak, he was deployed at a high altitude observation post T, which is a forward post along the line of control in Dawar, Gurez sector as artillery observation post officer. During this active deployment, he made the supreme sacrifice in the line of duty. Narayan Bhai, father of Sepoy Chaudhry Balabhai Narayan Bhai. Sepoy Chaudhry Balabhai Narayan Bhai, resident of Banas Kanatha, was enrolled in the Indian Army on 14 September 2018 in 154 Field Regiment. He served along the eastern borders in the difficult and inhospitable terrain of the high altitude locations of Sikkim. While on duty on 29 October 2021, the brave soldier made the supreme sacrifice in the service of the nation as per the highest values and ethos of the army. Bhagyashri, wife of Lance Naik Miraje Kuldeep Ashok. Lance Naik Miraje Kuldeep Ashok, resident of Kolhapur, was enrolled in the Indian Army on 25th March 2010 in 109 Territorial Army Battalion. During his years in the army, he served in various harsh field locations along the northern as well as eastern borders in Jammu and Kashmir and Assam. While on duty on 3rd November 2021, he made the supreme sacrifice of his life as per the finest traditions of the army. Sangeeta Sunil, wife of Sepoy Kumbhar Soraba Sunil. Sepoy Kumbhar Soraba Sunil, resident of Kolhapur, was enrolled in the Indian Army on 10th October 2020 in Army Medical Corps. He was efficient, a quick learner, enthusiastic and an earnest soldier. While on duty on 11th November 2021, he lost his life. Monika Raghav, wife of Havaldar Raghav Arun Kumar Singh. Havaldar Raghav Arun Kumar Singh, resident of Ahmedabad, was enrolled in the Indian Army on 1st February 2005 in Corps of Electronics and Mechanical Engineers. During his years in the army, he served at the difficult locations and harsh weather along the northern as well as eastern borders in Jammu and Kashmir and Tela. While on duty on 29th November 2021, he made the supreme sacrifice of his life in the service of the nation. Rabhi Surajben, wife of Sepoy Rabhi Lalabai Hirabai. Sepoy Rabhi Lalabai Hirabai, resident of Pathan, was enrolled in the Indian Army on 18th December 2012 in Army Service Corps. During his years in the army, he served in various inhospitable and harsh terrains and weather in various locations along the northern as well as eastern borders in Jammu and Kashmir and Manipur. While on duty on 29th October 2021, he made the supreme sacrifice in the service of the nation. Poolam Vikas, wife of Lance Naik Giramkar Vikas Ratilal. Lance Naik Giramkar Vikas Ratilal, resident of Pune, was enrolled in the Indian Army on 25th November 2003 in 9 Maratha Light Infantry. During his years in the army, he served in various harsh field locations and inhospitable terrains and weather along the northern as well as eastern borders in Jammu and Kashmir, Sikkim and Assam. While on duty on 9th December 2021, he made the supreme sacrifice of his life. Anandiben Chauhan, wife of Lance Naik Chauhan Dilip Singh Raiji Bhai. Lance Naik Chauhan Dilip Singh Raiji Bhai, resident of Kheda, was enrolled in the Indian Army on 17th March 2005 in Army Medical Corps. During his years in the army, he served in various difficult and remote locations along the northern as well as eastern borders in Jammu and Kashmir and Arunachal Pradesh. In the line of duty on 18th December 2021,
he made the supreme sacrifice of his life. Mahadev Balu Patil, father of Patil Manohar Mahadev. Patil Manohar Mahadev, resident of Kolhapur, was enrolled in the Indian Army on 20th September 2015 in 299 Med Regiment. During his years in the army, he served in various inhospitable and difficult locations under harsh weather conditions. He was a fine, loyal and disciplined soldier and an outstanding sportsperson. On 5th April 2020, while on duty and training, he lost his life. During service, he participated in various games, sports events such as cross-country and kabaddi at various levels. Anita Ganpati, wife of Sepoy Landge Ganpati Suresh. Sepoy Landge Ganpati Suresh, resident of Latur, was enrolled in the Indian Army on 18th December 2013 in 6th Mahar. During his years in the army, he served in various remote and inhospitable terrains with harsh weather along the northern border in Jammu and Kashmir, Siachen Glacier and Ladakh. He was deployed at Shumatang high altitude area in Leh and made the supreme sacrifice in service to the nation while performing operational duty at high altitude area on 6th May 2020. Swati Nagnath Lobhe, wife of Naik Lobhe Nagnath Abhang. Naik Lobhe Nagnath Abhang, resident of Latur, was enrolled in the Indian Army on 25th March 2008 in the Bombay Engineer Group and Center, Kirki, Pune. During his years in the army, he served in various difficult terrains and in hospital weather along the northern, western as well as eastern borders in Jammu and Kashmir, Siachen Glacier, Sikkim and Rajasthan. On 20 December 2020, he died while on duty in the forward area where operational tasks were undertaken. Sunita Devi, wife of Naik Bhainath Bhagwan Rao Kendre. Naik Bhainath Bhagwan Rao Kendre, resident of Latur, was enrolled in the Indian Army on 5th October 1988 in 11 Guards. During his years in the army, he served in multiple challenging locations along the northern as well as eastern borders in Jammu and Kashmir and Assam. While on duty on 23rd May 2020, he sacrificed his life defending the nation. Rathod Vanuben, mother of Sepoy Rathod Bhaveshbhai Dhirubai. Sepoy Rathod Bhaveshbhai Dhirubai, resident of Surendranagar, was enrolled in the Indian Army on 20th March 2016 in 23 Maratha Regiment. During his years in the army, he served in various challenging locations along the northern as well as eastern borders such as Jammu and Kashmir and Assam. While on sentry duty in counter-insurgency operations area, he made the supreme sacrifice on 6th June 2019. Rupali, wife of Sapper Deshmukh Shamrao. Sapper Deshmukh Shamrao, resident of Akola, was enrolled in the Indian Army on 18th March 2008 in Bombay Engineers Group, Kirki. During his service in the army, he has served in various harsh field locations along the northern and western borders in Srinagar, Siachen Glacier and Rajasthan. While on duty, he made the supreme sacrifice on 17th April 2016. Jyoti Rajendra Jagdale. Jyoti Rajendra Jagdale, wife of Havaldar Rajendra Jagdale, resident of Pune, was enrolled in the Indian Army on 27th January 2003 in 107 Engineer Regiment. During his service in the army, he served in various inhospitable field locations along the western and eastern borders in Assam, Rajasthan and Manipur. He died in the line of duty in Operations Rhino on 3rd January 2019.
think we missed Rupali. And okay, moving on. Prakati, wife of craftsman Kathekai Prashant, resident of Nagpur, who was enrolled in the Indian Army on 29 September 2005 in Corps of Electronics and Mechanical Engineers. During his service in the army, he was deployed to numerous harsh locations and terrain along the northern and western borders in Jammu and Kashmir and Rajasthan. While on duty on 31st January 2014, he never returned, making the supreme sacrifice for the nation. Poonam, wife of Havaldar Shinde Mahadev Vishwas. Havaldar Shinde Mahadev Vishwas, resident of Mumbai, was enrolled in the Indian Army on 24th October 1996 in Regiment of Artillery and served 17 Parachute Field Regiment. During his years in the army, he served in multiple harsh terrain and locations along the northern and eastern borders, to include Jammu and Kashmir and Assam. For an apt recognition of the superior results of all tasks allotted to him, he was also nominated for the United Nations missions in Congo. While on active duty on 20th July 2012, he breathed his last defending the nation. Neeta Deshmukh, wife of Havaldar Deshmukh Vinod Sahib Rao. Havaldar Deshmukh Vinod Sahib Rao, resident of Thane, was enrolled in the Indian Army on 29th October 1994 in 26th Maratha Regiment. During his service in the army, he served in diverse inhospitable locations, terrain and weather along the northern border to include Jammu and Kashmir and Siachen Glacier. On 26 December 2008, he made the supreme sacrifice in the service of the nation. Mansoba Ji Zala, wife of Havaldar Zala Ghanshyam Singh. Havaldar Zala Ghanshyam Singh, resident of Surendranagar, was enrolled in the Indian Army on 3rd February 1979 in 19th Grenadier Regiment. During his service in the army, he served in various difficult locations and harsh terrain coupled with inhospitable weather conditions along the northern, eastern and western borders in Jammu and Kashmir, Assam and Rajasthan. He also served in Sri Lanka. On 19th October 1995, while on duty, he made the supreme sacrifice in the service of the nation. So these were the luminaries who received a check of ₹2 lakhs with a trolley bag of gifts worth ₹50,000 and a society gift hamper. We now request the Veer Naris to please gather together for a photograph.
And it's time now for the Shanmukha Shaurya Ratna Award. Please allow me to read the citation. Shri Shanmukhananda Fine Arts and Sangeeta Sabha, Shri Shanmukha Shaurya Ratna Puraskar. श्री षण्मुखानंद ललित कला आणि संगीत सभेने मागील 70 वर्षात आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक संश्लेषणात अनन्यसाधारण भूमिका बजावली आहे. ललित कला म्हणजे गुणज्ञानाच्या मनातील कल्पना विलासच. ह्यात एखाद्याने मन भौतिक जगातून बाहेर काढून कल्पनेच्या रम्य प्रदेशात नेण्याची अमर्याद क्षमता आहे. सभेने आजतागायत हीच दरी विविध संस्कृती, धर्म आणि हितसंबंध एकत्र यावे यासाठी साधली आहे. प्रामुख्याने ललित कलांना आग्रहीपणे पुढे नेत असलेला नागरी समाज आणि सशस्त्र दले यांच्यातील अगदी वेगळ्या अशा भागीदारीच्या माध्यमातून सभा GOC महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा अंतर्गत लष्कर आणि त्याच्या कुटुंबियांचे समर्थन व सक्रिय सहभागासह तसेच राष्ट्रासाठी सशक्त दलाने केलेल्या बलिदानाचे स्मरण करून स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. स्वातंत्र्य दिन या कमांड एरियातील गणवेशधारी पुरुषांच्या विधवांना अर्थात अशा वीर नारींना समर्पित आहे ज्यांनी मागील वर्षी राष्ट्राच्या अखंडतेचे आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आपले प्राण अर्पण केले होते. प्रजासत्ताक दिन हा वुंडेड वॉरियर डे म्हणून साजरा केला जातो. लष्कराच्या विविध तुकड्यांमधील पॅराप्लेजिक व्यक्तींना सभेत आमंत्रित करून त्यांचा सन्मान केला जातो. प्रत्येक पॅराप्लेजिक युनिटला दरवर्षी 1 युनिट भरीव अनुदान देखील दिले जाते. अशा प्रकारे सभा सशस्त्र दलांना पाठिंबा व प्रेरणा देण्यासाठी सर्व स्तरांवर केल्या जाणाऱ्या अथक प्रयत्नांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत असते. सभा या मंचाचे संस्थात्मक रूपांतर करू इच्छिते ज्यातून राष्ट्रीय संरक्षणातील जनसहभागास प्रोत्साहन मिळेल तसेच सीमेवरील काही योद्धांच्या असीम योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करू इच्छिते ज्यातून सामान्य नागरिकांना प्रेरणा मिळून ते त्यांचे ऋण सदैव स्मरतील. श्री षण्मुख शौर्य रत्न हे याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. या वीरांचा गौरव करायची संधी मिळणे हा आम्ही आमचा गौरव समजतो. यावर्षी आपण आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आपल्या देशाची शौर्यगाथा असलेल्या अपशिंगे गावाला शौर्यरत्न पुरस्कार प्रदान कराव्यास मिळणे हा सभेचा बहुमानच आहे. सातारा जिल्ह्यातील अपशिंगे गावाची लोकसंख्या सुमारे 3000 आहे. गावात राहणाऱ्या 350 कुटुंबांपैकी किमान एक सदस्य सशस्त्र दलात आहे. पहिल्या महायुद्धात या गावातील 46 सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या सेवेचा गौरव म्हणून ब्रिटिश सरकारने गावाच्या मध्यभागी विजय स्तंभ उभारला. पुढे 1962च्या भारत चीन युद्धात आणि 1965 व 1971मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या 2 युद्धांमध्ये गावातील अनेकांनी बलिदान दिले. गावातील मुलांना लहानपणापासूनच सशस्त्र दलात कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते आणि त्यानुसार त्यांना प्रशिक्षणही दिले जाते. गावाच्या या अतुलनीय योगदानाची दखल घेऊन अपशिंगे गावाला श्री षण्मुख शौर्य रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान करताना सभेला अतिशय आनंद होत आहे. या प्रसंगी गावातील 75 दिग्गजांचा गौरव करण्यात येणार आहे. 5 लाख रुपये रोख, मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. त्यांचा सन्मान करताना आम्ही आपल्या संरक्षण सेवामध्ये सक्रिय भूमिका निभावणाऱ्या संपूर्ण समाजाचा सन्मान करत आहोत. सोमवार 15 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रदान केले. सही डॉक्टर V. शंकर, अध्यक्ष. I now request retired Brigadier Mohan Nikamji and Shri Amrit Jadavji to please come on stage
and accept the award on behalf of Avshinge village. Please give them a big hand. Retired Brigadier Mohan Nikamji accepting the shawl. Shri Amrit Yadav. Is being presented with the trophy. There is a check for ₹5 lakhs and the citation. Please keep clapping. Thank you. So that was the Shanmukhananda award being presented to Avshinge village, the military village, for its contribution to our nation. It would have been wonderful to have all 75 people who have come from Avshinge onto the stage, but that would not have been possible. So please, I would request the Avshinge village people to stand so that we can all give them a big round of applause. May we have more villages like Avshinge. Thank you. May I now request Lieutenant General Kalonji to please address us. Dr. V. Shankarji, President Shanmukhananda Fine Arts and Sangeet Sabha, Dr. V. Rangarajji, Shri Umesh Revankarji on stage, dignitaries from foreign countries who are here with us today, prominent members of the corporate body who have contributed in supporting this genuine cause in honor of our fallen soldiers, members of the armed forces fraternity who are here, a particular mention about our brothers from the Avshinge village who are here with us today, ladies and gentlemen and dear children. मैं सबसे पहले डॉक्टर शंकर, डॉक्टर रंगराज और शनमुखनंदा के तमाम परिवार वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर साल की तरह हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, ये काबिल तारीफ है। ये आज की तारीख में जब आम नागरिक बढ़ चढ़ के आगे आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, ये हमें आश्वासन देते हैं कि चाहे जो मर्जी स्थिति हो जाए, चाहे हम अपने परिवार वालों को खो दें इस देश की सुरक्षा करते समय, लेकिन हमेशा कोई न कोई उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए है इधर। जिन माता पिता ने अपना बेटा खोया है, जिन बहनों ने अपना भाई या पति खोया है, जिन बच्चों के सर से पिता का साया नहीं रहा,
उन सबको, उन परिवार वालों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपको सल्यूट करते हैं। जो कुर्बानियाँ आपने दी है ये देश हमेशा याद रखेगा। हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी की रफ्तार कुछ इस तरह तो बरकरार रख, ज़िंदगी की रफ्तार कुछ इस तरह तो बरकरार रख कि दुश्मन चाहे कितना भी आगे निकल जाए पर दोस्त एक भी पीछे न छूटे। आप दोस्त नहीं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारा आपसे वादा है कि आपको कभी पीछे नहीं छूटने देंगे, चाहे जो स्थिति हो जाए, जो हमसे बन पाए हम हमेशा करेंगे। हम तो सिर्फ एक जरिया है आपको, आपके परिवारों को, डॉक्टर शंकर और डॉक्टर रंगराज जैसे इन संस्थाएं जो इतना बढ़िया काम कर रही हैं, आप दोनों को साथ में लाने के लिए हमने सिर्फ एक जरिया बना है। तो हम आपका दोबारा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, हमें बिल्कुल गर्व होना चाहिए अपने देश के ऊपर, जो पिछले 75 सालों में हमें सलाम करना चाहिए हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने बलिदानियाँ दी हैं, जिन्होंने जान की कुर्बानी दी है ताकि हमें आज़ादी मिल सके। और इन 75 वर्षों में जो हमने हासिल किया है वो सचमुच में काबिल तारीफ है। सारी दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है कि ये छोटा सा देश जो सिर्फ 75 सालों में कितनी प्रगति कर चुका है, ये सचमुच में काबिल तारीफ है। मुझे याद है आज रेड फोर्ट के रैम्पार्ट्स पे जब 9वीं बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया तो उन्होंने बात की 5 प्रेरणाओं की। उनमें से 2 मुझे खास करके जो हमारे आम नागरिकों के लिए ज़रूरी है। एक, उन्होंने कहा कि हमें हमारी विरासत का मूल्य जानना चाहिए, हमारी विरासत की कदर करनी चाहिए। आपने छोटा सा एक उदाहरण देखा उसका आज सुबह कि जब बच्चों ने अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना की सुबह। ये हमारी विरासत है, ये हमारी ताकत है। ये चाहे आप जिस मर्जी भाषा, चाहे जिस मर्जी भगवान को मानते हो, हमें बस इतना विश्वास है कि ऊपर है एक शक्ति। जब परेशानी होती है, जब कठिनाई होती है, वो शक्ति है। आप चाहे जिस नाम से उस शक्ति को बुला लीजिए, लेकिन ये जो अनेकता में एकता हमारी है, ये आप लोगों ने दर्शाया, ये हमारी विरासत है। इसको संभाल के रखना और इसका मायने समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हर नागरिक का कर्तव्य बहुत जरूरी है इस देश को आगे लेके जाने में। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, जरूरी ये है कि हम हर नागरिक, हर सदस्य इस देश का अपने छोटे से तरीके से अगर सही रास्ते पे चलेगा, ईमानदारी और मेहनत और लगन से काम करेगा, भाईचारे से रहेगा, तो हम सब का कंट्रीब्यूशन जब इकट्ठा मिल जाता है तो अब बिना किसी शक के ये देश और ऊंचाइयों को छुएगा। मैं ब्रिगेडियर सावंत आणि आमचे भाई बंधू परिवार वाले जो अपसंजय विलेज के हैं, जे इथे आले आहेत, तुम्ही जर फार चांगलं काम करता है, आम्ही सगळं तुम्हाला सल्यूट करता है, अभिनंदन करता है कि जो तुम्हाला पुरस्कार मिला है, पुढे पण असंही चांगलं काम करत रहा। सचमुच में एक छोटा सा गांव जिसमें 350 परिवार, 3000 लोगों की संख्या, हर परिवार का सदस्य इस फौज में रहा है और आगे भी ये कंट्रीब्यूट करता जाएगा। 4 सदियों से फौज में कुर्बानियां देते आ रहा है एक छोटा सा गांव। ये हमारे लिए एक उदाहरण है और सचमुच में काबिल तारीफ है। मुझे एक बार दोबारा शानमुखना फाइन आर्ट्स एंड संगीत सभा को सल्यूट करना पड़ेगा कि इन्होंने इस गांव के बारे में पता किया, इन्होंने आपको आज अवार्ड दिया है, आपको रिकग्नाइज किया है। ये सचमुच में काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं एक बार दोबारा हमारे तमाम आर्म फोर्सेस फ्रेटर्निटी जो इधर आए हैं, जो बच्चे आए हैं, जो हमारी बहन अभिलाषा जिसने इतना बढ़िया संगीत गाया है, जो शानमुखा फाइन आर्ट्स एंड संगीत सभा के तमाम सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि ये हमारा परिवार की तरह जो एक संबंध है ये हमेशा की तरह बनता रहे और हम हर साल इसी तरह आगे भी ये प्रोग्राम करते रहें और हमारे परिवार वालों को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Thank you, General Sahib. I now call upon our Honorary Secretary, Dr. V. Nagaraj, to present the vote of thanks. At the stroke of midnight hour, 75 years ago, India began a tryst with destiny. Freed from the shackles and servitude of the British rule, a free country spilled on the streets celebrating their independence. It's a very emotional day for all of us, and at the same time, we feel very proud that we have covered a major milestone in the journey of this nation. We sincerely thank the families of the fallen soldiers and the army personnel who have come all the way from different parts of Maharashtra and Gujarat for this felicitation function. We thank the army officers and the staff from the Kolaba headquarters for helping us to identify the families of the fallen soldiers. We sincerely thank the Shanmukha Shaurya Award winners from the Atsangya village who came all the way from Satara district and who have taken the trouble to be with us today. Our special thanks to retired Brigadier Mohan Nikam of the village who has come to receive this award. We thank Srimati Meera Jagan who is going to provide a very fine mono act on Azadi Ka Purva Kuch Yaad Hai. I must thank the 75 students of our Sangeeta Vidyalaya who rendered the 5 stanzas of the national anthem. We thank the children of the Vijay Home Orphanage who have come today. I would like to thank Sri Rajarajeshwari Kalamandir, a doyen who is sitting over there, who will be performing the group dance on Amrit Mahotsav. I thank the NCC unit of the SIS College who performed the Guard of Honor for the GOC and other students from the SIS who chanted the Sarvadharma prayer. I thank Srimati Abhilasha for the soul-rendering invocation song. Our heartfelt thanks goes to the GOC, his wife Mrs. Harkiran Kalum, and the team of officers under the direction of Brigadier Ajalesh Shankar and Colonel Arthur Phoning, who did such an outstanding job with military precision in helping us to organize this event. It is with deep sense of gratitude we thank Sri Umesh Revankar, Vice Chairman of this Sriram Finance Group. We thank Mr. Sanjay Shah, Director Society team, who spontaneously agreed to give us the hampers. We thank our sponsors, HDFC Bank, National Payments Corporation, NQ, Mahindra Finance, Mr. Israni Foundation, Bank of Maharashtra, Carriage Ratings, and Union Bank of India. As the nation celebrates the sweet nectar of Amrit Mahotsav, let us not forget that we need to do more by sending this message on a global level that our nation values peace, communal harmony, love, and respect for each other. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Rangraj. And with this, we conclude the award function. All rise for the national anthem, please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
रहे। Presenting a mono act in Hindi based on an incident during the partition of India and Pakistan after the independence of our country in the year 1947. The days which followed the partition witnessed horrific scenes of riots and killings and massacre on both sides of the border. Families were separated, innocent lives were lost, and an atmosphere of fear prevailed in both India and Pakistan. In the following mono act by Jayavira Jagannath, who is a senior artist of the Mumbai Tamil stage and a member of the Shanmukhananda Sabha, she brings onto the stage the misery and sufferings of a Punjabi lady who crosses over from Lahore to Amritsar during that period. This mono act was originally performed in Tamil, but for today, on our President Dr. V. Shankar's request, the script written by Jayavira herself has been translated into Hindi by her dear friend Manohar Iyer, who has also lent his voice for the introduction and commentary sections. The music interludes are by Ram Mohan. 2 साल जब हमारा देश अंग्रेज हुकूमत की गुलामी से आजाद हुआ, एक तरफ आजादी का जश्न, हर्ष और उल्लास, आमोद प्रमोद, तो दूसरी तरफ क्रोध और आक्रोश, दंगे फसाद, खून खराबा, जंगो जदल। ये उस वक्त के पंजाब के अमृतसर की गलियों में घटी हुई एक घटना है। हाय रब्बा, किथे जावां, कहाँ जाऊं मैं, किससे मदद मांगू? यहाँ तो हर कोई किसी न किसी से मदद की आशा और उम्मीद में भाग रहा है। सुनिए, ये आप बता सकते हैं वो गुरचरण सिंह का ढाबा कहाँ है? वो सुनिए सुनिए, अरे वीर जी, वो गुरचरण सिंह का ढाबा कहाँ है? ये वीर जी रुकिए तो। अरे तू ते मेरी मदद कर पुत्र। हाँ, गुरचरण सिंह, वो गुरुद्वारे की गली में जिसका कपड़े की दुकान है, वही। तू उसे जानता है? बोल पुत्र। हाँ, क्या उसे गोली मार के उड़ा दिया? ये तो क्या कह रहा है? ये पुत्र, अरे मेरा भाई भी चला गया। हाय रब्बा। गुरचरण, मैं तो यहाँ आई सिर्फ तेरे भरोसे। अब तक उनकी जुदाई का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अब भी वो घटना मेरे आंखों के सामने है। लाहौर में हमारा बंगला, दुकानें सब छोड़ छाड़ के हम यहाँ वहाँ भागते रहे। मैं, सुखविंदर, सुखी और मेरे 2 सोने जैसे पुत्र, हमनप्रीत और रजिंदर, मेरी भाभी दलजीत कौर और दलजीत की बेटी हरप्रीत कौर, सब के सब भाग निकले। बोरिया बिस्तरा बांधने को भी वक्त नहीं था। देखा जाए तो हमारा वक्त ही खराब था। गुरु नानक जी की तस्वीर और ग्रंथ साहिब को एक रेशमी कपड़े में लपेटकर जो कुछ भी हाथ में मिला, कपड़े, लते, जेवर, पैसा, सब समेट कर वहां से भाग निकले। क्या? क्यों भाग निकले? जान को ही खतरा था, हमारे बचाव के लिए भाग निकले। हाथ में तलवार और बंदूक लिए हिंदुस्तानियों को मारने के लिए जो पीछा कर रहे थे, उनसे बचने के लिए भाग निकले। हमनप्रीत, रजिंदर और हरप्रीत जैसे मासूम बच्चों को भी जिन्होंने बेदर्दी और बेरहमी से मार डाला, उन हैवानों से बचने के लिए भाग निकले।
अपनी बच्ची की जुदाई जो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उस दलजीत को कुएं में गिरकर अपनी जान देने के लिए जिन्होंने मजबूर किया, उन हैवानों से बचने के लिए भाग निकले। और फिर अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे ऊपर जो गोली लगने वाली थी उसे अपने सीने पर खाकर आखिरी सांस तक सरदारनी तू भाग जा, रब दा वास्ता तू इथुन भाग जा कहने वाले सुखी के लिए हम भाग निकले। हम भाग निकले? नहीं, मैं भागी, सब लोग चले गए, मैं अकेली यहां वहां भागती रही। यहां आकर मेरे गुरचरण सिंह के गोद में सर रखकर दिल खोलकर रोने के लिए आई। हाय रब्बा, रो रही हूं, दिल खोलकर रो रही हूं, लेकिन गुरचरण सिंह के गोद में सर रखकर नहीं, उसे खो देने के दुख में रो रही हूं। हाय रब्बा, हुण सी की करा, कोई तो रास्ता दिखा दे मेरे सच्चे पातशाह, कोई तो रास्ता दिखा दे। तू कहे डोले प्राणिया, तुध रखेगा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। मेरे पापा जी अक्सर कहा करते थे कि वहां सब परेशानियों का हल मिलता है। मैं वहां जाके देखती हूँ, हाँ वही ठीक रहेगा, वही ठीक होगा। मैं गुरुद्वारा में जाके देखती हूँ। हाँ, हाँ। कोई है? गुरुद्वारा में कोई है? कोई है? आप कौन? मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मोहसिना बेगम, आपके दोनों बच्चे तो बहुत घबराए हुए हैं। आपका नाम क्या है पुत्र? फैयाज। और बच्ची आपका? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, बड़ा सुंदर नाम है बच्ची आपका। और ये आपके अशरफ मियाँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ, मैं आपकी तरह सलाम दुआ कर रही हूँ, ये सुनकर आपको ताजुब हो रहा है? 20-25 साल लाहौर में पली बड़ी हूँ, वहाँ के लोगों के साथ कारोबार करने वाले परिवार में से हूँ। उन दंगे फसाद के दिनों में हमारे पड़ोस के एक परिवार ने हमें कई दिनों तक आसरा दिया, रहने के लिए जगह दी, छिपने के लिए जगह दी। लेकिन जब यह बात चर्चित हुई तो उस यूसुफ खान के परिवार को ही खतरा होने लगा, इसलिए हम वो जगह छोड़कर भाग निकले। हाँ, अब मैंने क्या नाम लिया? यूसुफ खान, उनके बेगम का नाम रुबीना। क्या वो दोनों आपके भाईजान और आपके भाभीजान हैं? हाय रब्बा, एक मिनट, ये एड्रेस देखिए आप। एक मिनट। यूसुफ खान, 108 मस्जिद वाली गली नंबर 3, लाहौर। ये वही लोग हैं। हाय रब्बा, ये केड़ा खेल खेल रहे हो? ये कैसा खेल खेल रहे हो? मेरे पाशा,
मैंने एक आखिरी चंगा काम करन वास्ते हिम्मत दो मेरे पास, हिम्मत दो। भाईजान, आप फिक्र ना करें, मैं आपको उस पार ले जाऊंगी और उनसे मिलवा दूंगी, और तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये एक सिकड़ीदा वादा है। खुदा को याद कीजिए और चलिए। बेगम, चलिए। आओ बेटा। मेहरुनिसा, आओ मेरे बच्चे, आओ। मैं आपकी दादी जान। हाँ बेटा, आओ। जहां हमने कुछ खोया है वहीं उसे ढूंढना भी है, यही प्रकृति का नियम है। क्या इस मामले में वो सरदारनी कामयाब हुई? पता नहीं, उनका नाम तक मालूम नहीं। वो जिंदा है या नहीं इसकी भी कोई खबर नहीं। आजादी मिलने के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, तब उस वक्त इस सरदारनी ने जो खोया था वो धन दौलत नहीं था, बल्कि अपनी जान से भी प्यारा अपना पति था, अपनी आंखों के तारे थे, अपनी बिरादरी के लोग थे, सारे रिश्ते नाते थे। सच पूछो तो उस सरदारनी ने अपनी जिंदगी को ही खो दिया था। जिस लाहौर ने उसे तबाह कर दिया था, उसे बेसहारा कर दिया था, उसी लाहौर में अपनी जान को खतरा है, ये जानते हुए भी अशरफ भाई, मौसिना बेगम और उनके 2 बच्चों को लेकर वापस जाने का क्या कारण था? क्या वो उसका इंसानी जज्बा था, मानवता की भावना थी, या फिर लाहौर के लिए उसका प्यार और उसकी कृतज्ञता? पता नहीं। जिस मकसद से वो निकली, क्या वो पूरा हुआ? उस सरदारनी का क्या हुआ? अब वो कहां है? कुछ मालूम नहीं। आजादी के इतने सालों के बाद इन 2 मुल्कों के नागरिक दोनों मुल्कों में आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। उन कोशिशों में लिए गए कदम में एक छोटा सा प्रयास है आज का ये पीस कॉन्फ्रेंस। सलाम। पीस कॉन्फ्रेंस डेलीगेशन के साथ आई हूं। मैं आप सबके बहुत शुक्रगुजार हूं, खास तौर से इस पीस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी बदौलत मुझे अपने जज्बात के इजहार का मौका मिला है। कई सालों के बाद मैं भारत वापस आई हूं। भारत वापस? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले कभी भारत में थी। जी हुजूर, सही फरमा रहे हैं। जब अंग्रेज हुकूमत ने इस देश को तोड़ के रख दिया था और हिंदू और मुसलमानों के बीच उनके मन में नफरत की भावना पैदा किया था, तब मैं यहीं थी। उन दंगे फसाद के दिनों में मैं यहीं इसी गुरुद्वारे में मेरे अब्बू, अम्मी और भाईजान के साथ छिपी हुई थी। उस वक्त एक पंजाबी औरत ने हमें सही सलामत उस पार ले जाने का वादा किया था। क्या अभी नहीं समझे? मैं ही उस अशरफ मियाँ और मोहसिना बेगम की डरी हुई सी बेटी हूँ, मेहरुनिसा। दिली सलाम कबूल फरमाए। लाहौर में हमारे बिछड़े हुए परिवार को एक करके, खुद अपने परिवार के लोगों को गवाकर हमारे साथ रहने वाली वो सरदारनी एक 20 साल पहले दुनिया से चल बसी। उस सरदारनी ने ऐसा क्यों किया? जिन अंग्रेजों ने उस औरत को खून के आंसू रुलाए, हम उन्हें इतनी आसानी से मुआफ कर दे? हरगिज नहीं।
अंग्रेजों ने इस देश को तो तोड़ के रख दिया, लेकिन हम क्यों आपस में लड़के हमारी एकता को तोड़े? उस औरत का त्याग और बलिदान मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो हर वक्त अपने वतन को याद करती रहती थी। ऐसा एक दिन नहीं गुजरा होगा जब वो अपने सुखविंदर और अपने दोनों बच्चों को याद करके आंसू नहीं बहाया होगा। वो अपने विचार और जज्बातों को इस छोटी सी डायरी में लिखती थी और मुझे पढ़कर और गाकर सुनाती थी। उनका लिखा हुआ एक छोटा सा गीत आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। हाँ, सरदारनी की तरह मैं गा तो नहीं सकती, लेकिन पढ़ के जरूर सुनाऊंगी और आशा करती हूँ उनका लिखा हुआ हर लफ्ज आपके दिलों को छू जाए। सुनिए। सालों पहले देश ये आजाद हुआ था याद है, यारों फिर ये वतन क्यों नहीं हर दुख से आजाद है। आपस में टकरार क्यों, हर बात पे इनकार क्यों, यूं ही झगड़ते लड़ते हर इंसान यहाँ बर्बाद है। सालों पहले देश ये आजाद हुआ था याद है। मंदिर में तुम राम कहो या मस्जिद में रहमान कहो, हम सब हैं भाई भाई, यही नानक की फरियाद है। सालों पहले देश ये आजाद हुआ था याद है। गिनती नहीं है वीरों की, यहाँ कमी नहीं बलिदानों की, बनी रहे अब सदा एकता, देश की ये बुनियाद है। बनी रहे अब सदा एकता, देश की ये बुनियाद है, देश की ये बुनियाद है। आप सबसे मेरी एक आखिरी गुजारिश है कि उस सरदारनी ने जो एकता, सद्भावना और भाईचारा के सपने देखे थे, उन सपनों को हम सब मिलकर पूरा करते हैं। आइए, सलाम। भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। उन्हें प्रायः स्वातंत्र्य वीर और वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। सावरकर म्हणजे स्वतंत्रता, सावरकर म्हणजे देशभक्ती, सावरकर म्हणजे वीर. आता सादर करीत आहोत त्यांनी रचलेली जयोस्तुते. मनाला स्पर्श करून जाणारी इतकी सुंदर रचना आहे. आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त त्यांची ही न भूतो न भविष्यती अशी काव्यरचना आपण बघूया. प्रस्तुत आहे जयोस्तुते बाय द स्टुडंट्स ऑफ द संगीत विद्यालय. श्री
वंदे Written by Prasun Joshi and composed by Shankar Mahadevan, Jayatu Bharatam is a tribute to the soldiers, to the martyrs, and to the everlasting spirit of India during tough times. For the first time in history, 211 voices have united to prove that it is indeed one nation and one voice. Jayatu Bharatam, performed by the Dance Vidyalaya students. जयतु जयतु भारतम जयतु जयतु भारतम विश्व प्रेम की ओर चदरिया जगा हुआ भारत है विश्व प्रेम की ओर चदरिया विश्व प्रेम की ओर चदरिया सच्चे स्वर में गाता है एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है विश्व प्रेम चादर ढेके श्रुतिर शूरे गान गाए സിന്ധമിവാനിൽ പുതിയ പുൻവിടിയിൽ ആയിരമാധവൻ തോന്നിടുതേ विश्व प्रेमाची ओढून सादर खऱ्या सुरात मी गाता आहे. एक सुरीली आशा लईने सूरज नवो उगाड़े छे जागा हुआ भारत है ये 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 जय तु भारत जय तु भारत वसुधैव कुटुम्बकं जय तु भारत हो श्वास मेरी प्राण मेरा तू ही मेरा मन बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम कर्मधात्री जन्मधात्री कई माणुवणुवो धार पोसी अंकितमौदा सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण सर्व तेरे कोई तड़कन भक्त मोर श्रद्धा मोर तू मत अर्पण प्रेम का मृदंग रंग एकता का तू युगों युगों से एक छंद साधना का तू ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮಿಡಿವ ಪ್ರೇಮ ನಾದನಿ ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ನಾದನಿ तेरी शान तू महान ज्योति तू किरण पवन पवन गगन गगन करे तुझे नमन ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೀ ಕೆಡವಿಡತ್ತುನಿ ये वार भूमि निंदी भूमि कुंभिडुंबिदा जागर हमार भारत है एक जागे उठ्यो भारत से जो आज जागृत हम भारत नारी इंडिया बागाय मित्रों जय तु भारत जय तु भारत वसुधैव कुटुम्बकं भारतम जय तु भारतम् आशा
ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की ओर चढ़ विश्व प्रेम की ओर चढ़िया। जय तू भारत, जय तू भारत, वसुधैव कुटुम्बकम्। जय तू भारत, जय तू भारत। That was so full of energy. Thank you so much, girls. We conclude today's events with a dance ballet, Swatantra Amritotsav Nrityanjali, on patriotic songs by Sri Rajarajeshwari Bharatanaट्य Kala Mandir. Incidentally, they too enter into their 76th year. And in April this year, our beloved Guru, Kalyana Sundaramji, has been awarded the Sangeet Natak Academy for his exceptional contribution to Indian dance. So this institution also has a small bond with the armed forces, dating back to the times when Field Marshal Sam Manekshaw, its successor, General Gopal Gurunath Bewood's family members, his children, grandchildren, even his brothers' family members, all learnt Bharatanatyam from Sri Rajarajeshwari Bharatanaट्य Kala Mandir. Today they present to you Swatantra Amrit Mahotsav Nrityanjali, choreographed by Guru Kalyana Sundaramji. They first will present Aduvome Palli Paduvome in Tamil by Mahakavi Subramanya Bharati, followed by Sare Jahan Se Acha in Hindi, penned by Muhammad Iqbal, and Dhono Dhanno Pushpe Bhore in Bengali, written by Dajendra Lal Roy. Namaste. We are blessed to be here with you to salute the fallen heroes and those who have sacrificed their precious lives during the freedom struggle for us to be more free, independent. I don't know how many of us were lucky to be born during the British regime, excepting myself. Maybe there is another friend of mine, and there are very few who know the atrocities committed by the British Empire. We now start the program. The one that was visualized by Mahakavi Bharati, Subramanya Bharati, that he dreamt of this
country to be free from slavery, to become the free India. And he only called that Bharat Mata. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. He said, I already attained the very glorious independence, the freedom. It's very simple to follow. And also, although it is in Tamil, most non-Tamil guests also will be able to enjoy this song. It's beautifully written by our Mahakavi Subramanya Bharati.
Next comes song in Bengali. A similar theme is also handled. Following that is the Hindi Geet, now the Bengali Geet. Dono Donyo. ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা আসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খোঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি 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 পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাথী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি কুঞ্জরিয়া আসে ওলি পুঞ্জে পুঞ্জে দিয়ে তারা ফুলের উপর গমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ফুলের মধু খেয়ে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি 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 মায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ও মা তোমার চরণ ধুতি বক্ষে আমার ধরি আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি 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 We conclude. Thank you so much for taking mercy on me. Thank you so much. Now, we come to the concluding offering. It's a Hindi Geet, very popular, and I'm very much indebted to my very dear friend, Dr. V. Shankar. And he said, you must choose the most popular song in each of the language you are going to render.
Thank you very much, Dr. Shankar, for allowing me to get these songs. And also, we are very grateful to the scholars, Professor Joshi, and he's a Marathi poet and professor who has helped me a lot in the Hindi thing. Similarly, my very respected Professor Deboshish Ghosh. It's very difficult for me to, I cannot spell the name so well. And he has volunteered himself to correct our intonation, the pronunciation. He said, let me correct the thing. And he sat with us and guided us so much. Thank you so much. And thank you very, very much. I do not know how to salute you all, because it's a rare gesture on the part of the thing. It started at 10 o'clock. We are still on 1. We are holding you back. And it only shows that how much respect you have got for your motherland. Thank you so much. The Hindi Geet. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता
आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। Thank you, ladies and gentlemen. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।